Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'll be testing a hair remedy जो YouTube पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है. People on YouTube are actually claiming that this remedy is an alternative for the Botox treatment that we can get done in the salons. एंड अगर ये रेमेडी वर्क करती है तो आई एम नॉट लुकिंग एट द सलॉन्स एनी मोर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे जंप इनटू द रेमेडी एंड सी व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर फॉर आवर रेमेडी टुडे. सो फॉर टुडेज रेमेडी विल बी नीडिंग 4 ingredients: water, cornstarch, olive oil and argan oil. Now let's talk ingredients. So the first ingredient is cornstarch or corn flour. Now cornstarch is believed to be adding shine to your hair, luster to your hair and helps in detangling your hair, but it is not proven whether it works for straightening your hair or providing a Botox effect to your hair. Next ingredient is olive oil, which is one of my favorite oils for hair because it adds moisture to your hair. It is a good nourishment for your hair. It adds shine to your hair. Third ingredient is argan oil, and argan oil is believed to be helpful in neutralizing your hair damage, providing moisture, reducing split ends and hair breakage. So the ingredients individually look quite promising in this hair remedy, and whether they work or not, let's find out. Now to start preparing the remedy, I'll take 1 glass of water and add it to a pan. In this I'm adding 2 spoons of cornstarch and we'll give a nice stir. इसके अंदर lumps नहीं बनने चाहिए as per the remedy that I've seen on YouTube. So we'll whisk it thoroughly so that कोई lumps ना बने. अगर बन भी जाएंगे तो बाद में हम उसको stir out करेंगे, तो इसलिए do not worry. अगर थोड़े बहुत lumps बनते भी हैं, let it be. अच्छे से stir out करने के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे ये कुक होगा तो ये हल्का सा milky white से transparent gel consistency में convert हो जाएगा, and that is our main ingredient for today. And we'll strain out the gel through it so that any lumps, if there are, then they can be removed and you will get a very smooth transparent gel for your hair. Now in this we'll add rest of the ingredients, which is 2 spoons of olive oil and 1 spoon of argan oil. अब ऑयल्स ऐड कर लेने के बाद अब हम इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स टू स्मूदन इट आउट. आपके ऑयल एंड जेल अच्छे से मिक्स नहीं होगा बिकॉज वन इज ऑयल एंड वन इज वाटर बेस्ड, बट यू नीड टू स्टर इट वेल सो दैट एक यूनिफॉर्म सा पेस्ट आपको मिल जाए. एंड योर हेयर मास्क इज एब्सोल्युटली रेडी. Let's go. एज पर द रेमेडी हम सबसे पहले अपने बालों को ब्रश आउट कर लेंगे सो दैट देयर आर नो नॉट्स बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई द मास्क. अब हमको लेने हैं छोटे छोटे सेक्शंस अपने बालों के एंड स्टार्ट करना है अप्लाइंग द मास्क टू आवर हेयर. So guys, I've washed my hair and dried it, and now for the final result. This is the before and after picture. Honestly, I don't think there is much difference between the before and after picture. The appearance looks similar, but yes, hair are much softer. पहले के comparison में मुझे बाल बहुत soft लग रहे हैं, but अगर Botox treatment की बात करें, I don't think this is a comparison to the Botox treatment which we get in the salon. Yes, they are soft, they are manageable, and मुझे थोड़ा सा shine में भी improvement लग रहा है अपने बालों में as compared to before, but not an alternative for Botox treatment. Now for someone like me who believes in natural remedies more than the chemical treatments that are done in the salons, this is a good alternative. अगर आपको एक nourishment,
एक सॉफ्टनेस अपने बालों में चाहिए तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है विच इज़ ऑल नेचुरल। बट अगर आपको वो बॉटॉक्स ट्रीटमेंट वाला स्ट्रेटनेस चाहिए, स्मूथनेस चाहिए एंड वो शाइन चाहिए, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द बॉटॉक्स ट्रीटमेंट इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल विद दैट। एंड मैंने बहुत सारी हेयर रेमेडीज ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर करी हैं जिनके आफ्टर इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं। सो इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन वॉच दोज। बट या, it is a good remedy for hair conditioning and smoothness and all, but an alternative for Botox treatment, I don't think so. So guys, this was my today's video. I hope you liked it. अगर वीडियो पसंद आई हो एंड प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं देन प्लीज डू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। एंड मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।